and welcome to EduGyan. So, dear students, my fellow aspirants, let us start today's some important current affairs regarding to your OCS prelims and mains examinations. So, without delay, let us start the class. Before starting the class, I would like to urge you, I would like to request you to subscribe my channel, like it, share it, so that it will impact us, it will motivates us to provide good quality, good content, and that will definitely help for the upcoming OCS prelims and mains examinations. So let us start the class. The first article is ये भाई किए डोनाल्ड ट्रम्प पूरा देखिले रागुची राग राग मोरे furious man. Okay, the first policy America first policy. Okay, so the first article is GS2 international relations. US President Donald Trump imposes sanctions on the ICC. ICC means what? Not your international cricket control. It's your international criminal court. Okay. तो डोनाल्ड ट्रम्प कौन करछथि बा आईसीसी ऊपर यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऊपर से सैंक्शन इंपोज करिसंती ओके कौन पाई करछंती देखिबा सोर्स कोन अछि द हिंदू यू नो सिविल सर्विस एग्जाम पाई बा एनी स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम पाई द हिंदू प्लेज अ वाइटल रोल ओके सो न्यूज़ कोन देखो US President Donald Trump signed an executive order imposing sanctions on International Criminal Court ICC. Why? In response to its investigation into Israel. You know, Israel and US are very allied. Okay, the close allied to each other. तो जेहेतु ICC मन अछि जो गाजा स्ट्रीट जो अटैक करथिला कि आपनकर इजराइल अटैक करथिला ताको नै कि समस्त इट्स वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो आईसीसी कोन कहला कि ता ऊपर कार्यवाही करा इन्वेस्टिगेशन करा इजराइल ऊपर तो सेति पे डोनाल्ड ट्रम्प के पूरा राग तो नाय भाई नाय आ सही होबनी लगेला सेक्शन 2 ऊपर ओके तो देखो तो आईसीसी गोटे अरेस्ट वारंट इश्यू करथिला का अगेंस्ट रे ना इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू को अगेंस्ट रे ओके कोन पाई ना रिलेटेड टू alleged war crime in Gaza. Okay, you know, both US and Israel they don't recognize ICC's jurisdiction. तो सेमाने recognize करती नहीं ICC रा jurisdiction को Israel और US. Okay, तो तनु Trump को कहले Trump sanction certain significant consequences of ICC officials involved in the investigation. Okay, तो Trump का sanction को करियो ना गुटे significantly गुटे consequence क्रिएट करियो कि जो आईसीसी ऑफिशियल्स माने जो माने इन्वॉल्व अछि इन्वेस्टिगेशन ले तो तांको ऊपर तो खतरनाक एक्शन दिया हम ओके देखो तो किछि एडिशनल डिटेल कोन कहला तो एक्चुअली आपनकर जो सैंक्शन लागि थिला इंपोज हेतला आईसीसी इश्यू करथिला अरेस्ट वारंट नेतान्याहू बेंजामिन के अगेंस्ट रे ओके आउ का अगेंस्ट रे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थिले कहारो इजराइल ताना करथिला युआव गैलेंट कोन पाई ना एक्शन सिटी गाजा जोटा कि 2023 रे हितला हमास को अटैक करथिले ओके व्हिच रिजल्टेड इन न्यूमरस पैलेस्टाइन कैजुअलिटी बहुत सारा पैलेस्टाइन लोक माने मृत्युवरण करथिले सिविलियंस माने मृत्युवरण करथिले ओके तो रीजन करथिला सेक्शन लो कि यूएस आर्ग्यू कला जे आईसीसी जो ओवरस्टेपिंग बाय prosecuting leaders of non-member states and that such actions are unacceptable against US allies. Yes, तो एक पॉइंट सच तो यूएस कहला कि आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो से ଗୋଟେ ओवरस्टेप करछ कोन करछ ना जे लीडर नुहे सॉरी जो माने मेंबर स्टेट नुहंती तो तांकू कोन पई एते प्रेफरेंस दिया होछ ओके कि जोटा कि आपनकर यूएस पसंद करेनी यूएस रे एलाइज अगेंस्ट रे
जे तुमको सैंक्शन लगे दैट यूएस इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट ओके तो सिग्निफिकेंट कोट करो देखो द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुड लीड टू फ्रीजिंग द एसेट ऑफ आईसीसी ऑफिसर यस यूएस तो शेयर करते कोन बंद कर दबो तार यू को फ्रीजिंग द एसेट ऑफ आईसीसी ऑफिसर्स ट्रैवल बैन फॉर देयर फैमिलीज तो समाने निज फैमिली पे ट्रैवल कर जाई परिबेन ओके सो ये प्रॉब्लम सब फेस करियो ट्रैवल बना आउ अगर एसेट को सीज कर दो yes तब क्रिटिसाइज करा हो देखो तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज ह्यूमन राइट्स वॉच ओके ए जिंस को से कंडेम करछंती नो इट्स नॉट ए राइट प्रोसेस यूएस जा करछ ठीक नो बिकॉज़ दे आर्गुइंग दैट दे अंडरमाइन इंटरनेशनल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी ओके तो ये तला अपना फर्स्ट आर्टिकल जब अपने सामने रखिल क्लियर then come to the next article GS3 science and technology अछि triple E3 what economy environment and employment biotechnology for economy environment and employment policy source the week देखो अगस्त 2024 रे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो गोटे अप्रूवल रिसीव करथिला टू इनिशिएट कंसल्टेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट मार्ग सहित से कंसल्ट करिवो कोन करिया पई ना टू एस्टैब्लिश ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया रे कोन करा अपना बायो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हमें एस्टैब्लिशमेंट करिवो सॉरी कॉलेज आगुर मध्य खराब अच्छे स्टिल आई एम कंटिन्यू द क्लास द बायो E3 पॉलिसी गोटे नेशनल इनिशिएटिव तो जहार मेन एम कोन रही छि ना प्रमोट करियो बायो मैन्युफैक्चरिंग को अब बायो इकोनॉमी इन इंडिया और मेन रहियो यार मेन आउ फोकस कर रहियो ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ बायो प्रोडक्ट मानु को हमें किपरि इंडस्ट्री क्षेत्र में बढ़ोतरी करि परिबु ता ऊपर अधिक एनहांसिंग रिसर्च एंड इनोवेशन करि परिबु एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करि परिबु ओके तर मेन एम रहिबो अच्छा आउ हमर जो रही छि कि आबे केमिति नेट जीरो इमिशन को अचीव करिबु ओके जो इंडिया रो कमिटमेंट रही छि तो ताकू किपरि आबे जते जल्दी अचीव करि परिबु तर मेन एम रहिबो क्लियर देन कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल लिखा कौन रही या GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन रही सोर्स सही द हिंदू टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज ऑफ इक्विटेबल एजुकेशन ओके तो इक्विटेबल एजुकेशन क्षेत्र में कौन प्रकार चैलेंज रही देखिए देखो the evolution of digital technology in India over the past 3 decades has created both opportunities and challenges in the field of education yes definitely तो डिजिटल टेक्नोलॉजी रो इवोल्यूशन ला पारे 3 डिकेड धरि की हमर एजुकेशन फील्ड रे गुटे प्रकार अपॉर्चुनिटी क्रिएट हेछि आ कुछ चैलेंजेस में फेस करछ विशेष करी आफ्टर कोविड-19 पर ए जो पैंडेमिक दा गुटे सिग्निफिकेंटली हमर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेलरेट करछ कोटी विशेष केवल रूरल पॉकेट रे रूरल इंडिया रे ओके पुशिंग टुवर्ड्स मोर इंटीग्रेटेड डिजिटल एजुकेशन मॉडल कि जोटा अधिक रु अधिक गोटे डिजिटल एजुकेशन मॉडल को एनहांस करछि जो डाटा दिया है एसआर रिपोर्ट एसआर कोन एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जोटी हाइलाइट करा है द इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स अधिक रु अधिक लोक माने स्मार्टफोन ताको एक्सेस करूछंती इवन रूरल पॉकेट रे मध्य ओके डिजिटल लर्निंग टूल्स ओके showcasing technology potential to bridge the educational gap जोतला को तोटे ब्रिज क्रिएट करछ ओके देखियो आपण करो कि डाटा रही छी स्मार्टफोन देखिबा ता राइज कते हेइ छै रूरल हाउस होल्ड रे 36% रु 84% ओके 2018 ले 36% थिला आफ्टर कोविड-19 एटा बॉडी के तमरे हेइ छी 2024 रे 84% जी ओके
डिजिटल एजुकेशन टूल ये बहुत क्रुशियल है पैंडेमिक परे परे ओके जोटा हमर ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड था ये सरपास कर ओके नेक्स्ट despite these achievements issues like limited access to devices yes so these are the success these are the achievements now come to the what is the challenges what are challenges the limited access to devices lack of digital literacy inconsistent school attendance so these are the significant barriers okay एमबे कॉलेज रे एआई प्रेजेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटी एबे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना ये नुआ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करछि फॉर पर्सनलाइज्ड एंड एक्सेसिबल लर्निंग एक्सपीरियंसेस ओके सो ये था आपनकर आर्टिकल नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल या guys recently 2024 I think गुटे 2023 I think yes ଗୋଟେ मूवी आस्ता डंकी डंकी करथला इट्स एन इलीगल पाथ जो इंडियंस माने ब्रिटेन बा यूके बा आपनकर होची यूएस जाउचोती दे आर गोइंग इलीगली ओके तो ताकू डंकी रूट खोआ जे तो एठी न्यूज़ कोन अछि ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप जीएस2 कोन रहिछि डंकी रूट ए हेरोइक जर्नी फॉर इंडियन डिपोटीज कौन रही ना रिसेंटली देखुं कि यूएस जो भाई भाव में सब इलीगल इमिग्रेंट्स जो बाहर करुच्ची इट्स ए वेरी वेरी क्वेश्चनिंग मैंने बहुत बड़ा गोटे चैलेंज इंडिया पे तो इंडियन डिपोटीज अराइविंग इन अमृतसर हैव रिकाउंटेड देयर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यूजिंग द डोंकी रूट फॉर इलीगल इमिग्रेशन से मैंने करूछन अमृतसर लोक माने ओके that highlighting the danger and challenges it the danger challenge madhyo threat madhyo the donkey route refer to perilous and unplanned journey undertaken for illegal immigration okay so it also involves crossing multiple international borders bahut sara international border cross kariya paduch through treacherous way illegal means kariya paduch okay to kichi additional detail dekhontu what is donkey route actually with a punjabi idiom rohichi the donkey route signifies a arduous journey filled with the uncertainty and risk gote journey jouti apanakar uncertainty rohite risk bodhe rohichi it is a process of illegal migration immigrants may acquire a tourist visa which allows movement across 26 countries and then illegally enter UK with the aid of the agent. The agent काम कौन रहुची ना agent charge substantial fees for this service that include providing fake documentation, visa, passport, etc. and facilitating smuggling operations. Okay, it's a concerning subject. Next कौन रही देखिए So next, GS2 governance, Swavalambi program, The Hindu news source, the Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, okay, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship recently launched konchi Swavalambi program कौन करिया पाई to empower female students in northeastern region of India. नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्व भारत रे जो फीमेल स्टूडेंट अछंती तो सेमान को स्वावलंबी करिया पाई ये स्वावलंबी पोर्टल मोड प्रोग्राम कराइछ का तरफ रु क्वेश्चन आसीओ ना द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओके तो इट्स एन कोलैबोरेटिव इफेक्ट इफोर्ट बिटवीन किए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप okay now the Indian Institute of Entrepreneurs IIE our Niti Aayog एमार उटा mixed collaboration our target कोन रहयो select higher education institution in Assam Meghalaya Mizoram तो Assam Meghalaya Mizoram तीनटा particular state जो higher institution अछंती education institution अछंती ताकू ये टारगेट करिवो
ଆଉ ये इनिशिएटर मेन हम कोन ना इक्विप फीमेल स्टूडेंट विथ एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो फीमेल स्टूडेंट अछंती ए इंस्टीट्यूट मान करे तो तांकर किपरि से माने किपरि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्रिएट हबो ताको से करी ओके रिसोर्स एंड मेंटरशिप नेसेसरी सक्सेस फॉर द वेंचर ओके तो इनिशियली कोन रहइबो ना ए जो जिंस रही छी जो एयरनेस प्रोग्राम रही छी एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम रही छी तो 600 फीमेल स्टूडेंट्स को गोटे एंटरप्रेन्योरशिप करा ताको ओके तो कौन रही देखो 300 सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल अंडरगो एन इंटेंसिव 40 आवर्स ट्रेनिंग ताको दिया essentially business aspects such as training and skilling access to finance market linkages compliance and legal support business service networking opportunities ताको ट्रेन करा ओके So now देखिबा कोन अछि yeah I think it is the last GS3 economy कोन रही छी repo rate cut by RBI a shift in monetary policy MPC जो monetary control policy रही छी RBI रो ताउ गुड अछि repo rate रही छी what is repo rate the rate at which RBI कोन करे ना RBI कोन करे जो रेट रे gives loan to the commercial banks bank जो लोन देते तब रेपो रेट को ओके तो रेपो रेट यदि कम हबो तले कोन हो डेफिनेटली कम सुध हार रे कम इंटरेस्ट रेट रे कमर्शियल बैंक लोन पाइले एवं से डेफिनेटली कम इंटरेस्ट रेट रे लोन प्रोवाइड करे को माने को कंज्यूमर माने तो कंज्यूमर पाखरे जो अधिक टंका रहिला तो से माने कोन करिवे एक्सपेंस कला कोन बना इकोनॉमी बढ़िबो ग्रोथ अधिक हबो ओके क्लियर इनटा पॉइंट कोड रहउची कनेक्ट कोड रहउची एटा हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ला जेतला आरबीआई राज्य मॉनेटरी पॉलिसी रहिची रिसेंटली जानजली की से रेपो रेट को रिड्यूस करची 25 बेसिस पॉइंट ओके तो जोटा आपनकर थिला 6.5 थिला परसेंटेज थिला ताकू 25 बेसिस पॉइंट कम करके 6.25% कराइची तो 57 मंथ परे गोटे कट कराइची कोन रखाइची एम that at blustering economic growth okay the repo rate has been decreased from 6.5 to 6.25 ଆଉ inflation को प्रेजेंट कराई छी ताको हमें डिक्लाइन करिबा 4.4 नेक्स्ट 25 26 रे 4.2 को मध्य को डिक्लाइन कबे का को हमर ना इन्फ्लेशन को तो जा फले कोन ना this lead to cheaper loan for various purposes including especially home and car loans. This is the first rate cut since May 2020. 2020 May पर प्रथम rate cut करछि RBI करछि. Okay, when the rate was lower 4% during COVID-19. COVID-19 समय रे only 4% थिला. COVID-19 पर धीरे बढ़िला एबे 6.5 रे पहुंचला. काहे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई. आकु कोन पई बड़ा रेट रेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिया पई ये गोटे पॉलिसी कार RBI रो. तो 57 मंथ परे तो आरबीआई जाउ से करे पे कट करे माने ओनली 25 बेसिस पॉइंट कम हिची ओके तो ग्रोथ रेट को बढ़िया माने जीडीपी फोरकास्ट का थिला देखो 6.4 थिला कि ताकू एक्चुअली 6.7 रे रखिया पई बढ़िया पई ए जिंस करा हिची आ इन्फ्लेशन को कम करिया पई जो इंडियन रुपी जो डेप्रिसिएशन हिची 3.2% अगेंस्ट यूएस डॉलर सिंस नवंबर 2024 तो याकूट मेंटेन करिया पे ये करा है इनिशियली है ओके सो these are the important articles that I have discussed right now in front of you my students my friends my fellow aspirants आशा करे लेक्चर टी बहुत आपण मान पाई फायदामंद हेतिबो बहुत इफेक्टिव थिबो यदि भल लागिथिबो डेफिनेटली लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे ताकि प्रत्येक दिन भल कंटेंट आपण पाई आनी पारिबे सो आज पे एतिकी जय हिंद जय जगन्नाथ गुड नाइट